Welcome students. Our chapter is going on resources and the development. In the today's sessions, we will discuss the types of soils. In our country, there are six types of the soils. First type is alluvial soils, red soil, black soils, laterite soil, desert soil, mountain soils. But you know how they are looks, how types are, which types of the quality this type the soil having. So let's okay the students we will discuss now the one by one. You can see in the picture this is the which type of the soil is there. This type alluvial soil is there. We can say in Hindi jilod mitti. I think you understand about the soils. If you not understand, then we will discuss more about the these soils. Alluvial soil is the most fertile, widespread soil found in our country, in our India. It is found in most part of the country, means northern plains in India, the states of Gujarat, we can say coastal plains. This means this soil is formed, the soil is made due to the depositions of fine silt called the alluvium by the rivers, by the help of river, which type of Ganga, Brahmaputra rivers. These types of soil found in India we already discussed, where northern plains, Gujarat plains and the coastal area. It consists of sand, silt and the clay types of this. I think you know the silt or clay meaning sand also. This type of soil is divided into two names, two types. Which are two types? One is Khadar, one is Bangar. What do you mean by two? Here, Khadar means the new types of alluvial soils and Bangar means all types of alluvial soils. This type of soil is contains the soil nutrients which are, we can say, potash, phosphoric acid, lime. So this type soil is so fertile. We can say it is good for the growth of which type of the crops? Sugar cane, rice, wheat and the pulse. We will also discuss here students that this type of soil is also we discuss the differences between here two words we discuss, which difference between the Khadar and Bangar. We can say the Khadar is old one, or here we can describe the Khadar, Bangar is old one, then Khadar is a new one, we can say. That's why the Khadar lies above the floodplain, reasonable this structure like a terrace-like structure. When we compare to the Khadar is a, we can say, renewed by the every years by the rivers. Which river we already discussed? Ganga, Brahmaputra. These are the rivers. Or it is the Khadar is highly fertile when we compare to the Bangar. So we can say this is the difference between two types, Bangar and Khadar. Next, we will discuss the black soil. Which type of black soil? Black soil is black soil because its color is black. That's why we can say black soil. But we know this soil is best for which cultivations? Which cultivation this soil is best? Cotton cultivations. Other features of the soils you must know. I think you don't know. Yeah, most of the students know. Means this type of soil is better for which cultivations? Cotton, and the self plowing is other characteristics. High water retaining capacity of these soils. Okay, students, dear students, we will discuss more about the black soil. We can say this is Regur means the cotton best for the cultivations. Which cotton? Most part in the India is black soil occupied Deccan area. High water retaining capacity. Soil is thickly when wet and when it shrink when the dried. Self plowing is another features. Or we also discuss the soil is rich in which iron, lime, calcium, potassium, aluminum, magnesium. But the soil have deficiency also. Which the minerals have deficiency? Nitrogen, phosphorus, and organic matters. What is the color? So color we know deep black and the light black. Deep black and light black. You can see in the picture deep black and light black.
We will discuss here which state the soil is found. Deccan region already we discussed. Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, and the Chhattisgarh. Which kind of soil is found? Black soil. Now we will discuss one more type soil is the red soil. What do you mean by the red soil? The well students, we will discuss the red soil. You can see mainly कहाँ होती है जहाँ rainfall क्या होता है. Which type of rainfall is there? We can say very low rainfalls. Variable structure, कंकर structure we can say. Absence of limes, कंकर जिसको कहते हैं impure calcium carbonate जिसको कहते हैं deficiency. Limes, phosphates, magnesium, nitrogen, hums, potash. It means this is not good for the agriculture activities, this soils, but it is also good for other activities. Like we can say, this is the good for the wheat, cotton, pulse, tobacco, oilseed, potato, etc. cultivators. In which state this type of soil is found? Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, and the छत्तीसगढ़ है झारखंड. तो आई थिंक कलर इस कलर कैसा होता है इसका रेड कलर होता है. Now we will discuss one more type soils, laterite. You can see the this type of soils is structure like a bricks type soil होती है laterite soils. We will discuss more about these soils. इसका नेम कैसे आया? From the Latin word later से आया, which means the bricks. This type of soil is become the soft when wet. कब ये soft हो जाती है? When the rain it's become the dried. When become the dried? When there is no rains, that time it become the dried. In which states this soil is found? High temperature, high rainfall. What is the characteristics? High temperature and high rainfall. और दिस सोइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्रॉम एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लिंचिंग ड्यू टू द रेनफॉल. लिंचिंग होती है हिल्स एरिया में ड्यूरिंग द हाई रेनफॉल में. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फ्रॉम. और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? और क्या होता है इसके अंदर? ऑर्गेनिक मैटर ऑफ दिस सॉइल विल बी रिमूव्ड बाय द फास्ट बैक्टीरिया. It is high temperature harms will be taken by the quickly by the trees, plants, so that in the soil the harms content is very low. This soil is rich in which iron and aluminum deficiency, nitrogen, potassium, limes harms. कलर क्या होता है? रेड कलर होता है ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड से. इस सोइल का रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड्स होता है. Good which cultivations? Do you take the tea or coffee? This is the good for tea or coffee. In which state? Karnataka states and the Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha. So laterite soil is good for which? Tea and the coffee. So now we will come the next soil, arid soil. Arid soil means if you have visited the desert area, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वेस्टर्न राजस्थान में होती है एरिड, जिसको सेमी और एरिड सेमी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ रेनफॉल कम होता है. देर इज़ लेस रेनफॉल और मेनली डिपॉजिट होती है बाय द विंड्स एक्टिविटीज से. हाई साल्ट कंटेंट, लेक ऑफ मॉइस्चर, हम्स, कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट हाई विच इज रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्लिट्रेशंस ऑफ वाटर. टेक्सचर सैंडी होता है, कलर रेड होता है, फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान. And the final soil in our chapter mention is forest. तो you can see the forest soils like a forest soil है तो forest जैसी होगी भैया, बिल्कुल वैसी है. तो we will discuss more about the forest soils. Forest soil is found in the forest area where the क्या होती है? Sufficient rainfall. The soil is very structure and texture means very means here different type of structure and different type of variations due to the heavy rains. ये differences कैसे आता है? Due to the heavy rains differences आता है. और ये लोमी सिल्टी भी हो सकती है, वैली साइड्स के अंदर चिकनी भी हो सकती है. इन द स्नो बाउंड एरिया द हिमालय के अंदर क्या होता है? में इरोजन्स की वजह से क्या हो जाता है? इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है. और इस सॉइल्स को जहाँ लोअर वैली एरिया में होती है वहाँ क्या होती है? इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशंस.
नेक्स्ट पॉइंट्स व्हाट वी विल डिस्कस इन आवर चैप्टर सॉइल इरोजन को डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द सॉइल इरोजन? मर्दा पर्दन क्या होता है सॉइल इरोजन? Means the removal of topsoil from the one place another place by the natural agency, natural activity is called the soil erosions. किससे हो सकता है ये? विंड से हो सकता है, वाटर में हो सकता है. और इससे क्या रीजन्स हो सकते हैं? इट इज़ कॉज बाय द रनिंग वाटर एंड द विंड्स. अदर रीजन्स इज डिफॉरेस्टेशंस, ग्रेजिंग्स एंड साइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चर. यानी हमारे जो खेती करने के जो तरीके हैं वो भी अनसाइंटिफिक हैं. और ऑल्सो अदर रीजन्स वी विल डिस्कस इन आवर चैप्टर. टू टाइप्स ऑफ इरोजन मेंशन किया गया है. एक तो गली इरोजन्स होता है, एक सीट इरोजन्स. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द गली इरोजन्स. क्या होता है? जब रेन वाटर मूवमेंट्स करता है कहाँ से? स्लोप में अनइवन एरिया के अंदर, तो इट क्रिएटेड द डीप चैनल्स. डीप खाई बना लेता है, उनको कैनल्स वो क्या कहते हैं? गलीज कहते हैं. दिस टाइप इरोजन इज कॉल्ड द गली इरोजन्स. और ए लैंड विच ब्रोकन इनटू द मैनी पार्ट्स या स्मॉल पार्ट्स में बाय द गलीज, वो बैड लैंड हो जाती है. दिस लैंड इज नॉट फिट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड ऑल्सो नॉट अदर एक्टिविटीज. यू कैन सी विच टाइप गलीज ये हो सकती है. यू कैन सी द पिक्चर. तो ये लैंड ना तो फिट है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए. नेक्स्ट टाइप अपने चैप्टर में मेंशन की गई है सीट इरोजन्स. मीन्स द वाटर फ्लो करता है तो जो सॉइल्स के अपर पार्ट्स है अपने साथ क्या ले जाता है? बहा करके ले जाता है स्लोप एरिया की ओर. तो इस टाइप्स को हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल को ले जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ इरोजन क्या कहलाएगा? दिस टाइप सॉइल इरोजन इज सीट इरोजन कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस द सॉइल कंजर्वेशन. तो क्या इस मिट्टी का भी हम संरक्षण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. पहला क्या है? कंटोर फ्लोइंग करते हैं. कंटोर फ्लोइंग का मतलब क्या होता है? कंटोर लाइनें बनानी होती है. और क्या कर देती हैं? ये रिड्यूस कर देती हैं किसके फ्लो को? वाटर के फ्लो को और स्लोप की तरफ. इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा. यू कैन सी इन द पिक्चर. नेक्स्ट टेरिस फार्मिंग क्या होता है? जनरली हिली एरिया में जहाँ स्लोप एरिया में कल्टीवेशन की जाती है टेरिस टाइप स्ट्रक्चर की. इससे क्या होता है? फ्लोर स्पीड को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है वाटर के फ्लो को. इससे बेनिफिट क्या होता है? सॉइल इरोजन नहीं होता. नेक्स्ट जो फार्मिंग है हम डिस्कस करेंगे यहाँ. स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है? लार्ज जो फील्ड एरिया होते हैं उनको डिफरेंट स्ट्रिप के अंदर डिवाइड्स कर दिया जाता है और दीज ग्रास आर लेफ्ट टू द ब्रोकन बिटवीन द क्रॉप के लगा दी जाती है. तो इसको क्या कहते हैं? ये जो एयर का जो स्पीड है उसको ब्रेकअप करता है. दिस मेथड इज नॉन एज ट्रीप वी कैन से स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर शेल्टर फार्मिंग.